Hello, greetings. So today in this video I'm going to talk about my shock again, continuing my shock on Sunni Shia conflict. And so I was so shocked at the stubbornness of the Sunni Muslims not being able to understand the Shia point of view, not sitting properly. Like Peshawar nights, long time ago, they had a dialogue between the Shia and the Sunnis. There were some bad feelings I could see in the beginning, but then the environment relaxed. I mean, when I was reading the book, I could feel it, this stubbornness that comes in Muslims, whether it's a long time conditioning, rumors. So what these rumors do against Shias is that making your children Sunni Muslims very hard against Shias, covering it is like this hard wall or something you put, and you're doing this, you're breathing or you're giving hatred, you're bringing bringing your children up in this hate against Shias. You're spoiling their innocence. You're taking away their innocence. Yes, so I even asked a lawyer in Pakistan. He was honest enough to tell me that since childhood, I'm grateful for his honesty at least. So he said, yeah, we've been hearing these rumors since childhood in Pakistan, the Sunni Muslims and their children. You're poisoning your children against fellow Muslims. And what makes you think that they are not the true Muslims and you are the true ones? And then some of you lie against Shias, false rumors. Can't see why. Does it make sense when you are saying that you are the believers of the one true religion that is above all else, all other religions? What kind of people are you really? Poisoning your own children? What kind of a name are you giving to this Islam? I mean, maybe some people cannot see, like it says in the Quran that Summan Bukman, the deaf, blind are they. So we always say that, okay, what can we do about this? No, we can do something about this like the Jews did on anti-Semitic. Bring a law. No, we are waiting for Imam Mahdi. Maula hai, Maula is their master, he will help us. Don't take any action. They can come and they can stone our procession like they did and threaten to burn our Imam Barka. We're not allowed to, in Bibi Fatima Zahra's Shahadat day in her majlis, we cannot openly say, we don't say openly who injured her. Whoa. Dusra, second one, and this, and I mean, maybe we can't even say second one because then their feelings will be hurt, as if Bibi was injured and you are bothered about your feelings and your second caliph's reputation. Or what are you bothered about? Are you bothered about the truth, or are you bothered about not saying anything to our the three Rashidun, because Imam Ali, Shias don't say anything.
No, and then this verse came for Abu Bakr. It did not come for Abu Bakr that the peace was brought, the two in the cave. It was because Rasulullah was there. And Rasulullah took him with him because he knew that if Abu Bakr stayed behind in Makkah while he was going to Medina to save his life, that he had to take the hypocrite along with him, so that this hypocrite treacherously would not give away and find Rasulullah, or make like Judas of Iscariot. Oh, sorry, Judas Iscariot of the Bible. In the Bible, it is recorded, did against Jesus Christ, sold him to the Romans. So sorry, I'm not able to say things properly, but still I will continue. I hope you get my point. This all, so many years in Pakistan, and yeah, we will say Hussainiyat Zindabad, Yazidiyat Murdabad. Of course, it is there in the Quran. Now you've killed Imam Hussein, so a curse. If there's a blessing, there's also a curse. Curse is on Allah's curse. Allah curses and the angels. Not only blessings are there. So I've spoken about this. One lady, this Dr. Farooq Zia, वो कौन सी सच्ची लेडी थी, वो एक झूठी मक्कार थी, फ्रॉड थी ये डॉक्टर फरोज जी अहमद. नो प्रोफेशनल प्रॉपर, वी कांट टेक. ऐसे धोखा देते, ऐसे कनिंग पाकिस्तानी ऐसे धोखा देते, पता नहीं चलता है कि धोखा दे दिया, और धोखे के ऊपर धोखा और धोखे के ऊपर धोखा दिया. और अभी ये मुस्लिम अरब्स के ऊपर एक वीडियो मुझे मिला है, वो भी दिखाना चाहिए, but I don't have whether I can, like write a letter, write to them or tell them, may I share this on my video and all this. So it's from the Memory News. You see, even Pakistani Muslims do this. They go abroad, they send their children abroad. Some of them have eloped. Then they, बहुत पहले eloped, run away to Canada and all this. Their daughter is telling me, Allama Rashid Turabi. और पता है बड़ी बात नहीं है, हम लोग, so I'll be talking in Urdu, sorry. I'm really unfortunate that my English did not improve, and that I was from I didn't even feel like a Pakistani. These Pakistanis have deceived us so badly. These Kashmiri Punjabis and Punjabis wanting to rule, regional problems we've had in Pakistan. So it was so broken that I didn't feel, I think I should have joined MQM at that time, but I was saying, what are these parties, and always fighting. Against MQM, there was this thing, Nawaz Sharif, Ziaul stand. So they wanted to give MQM a bad name. ना महाजर को रहने देते हैं सुकून से पाकिस्तान में. अभी तो ना बलोचियों को सुना है. आरिफ अजाकिया से, he's a very honest person, and he's taking action in he's in London, so he goes to Geneva, he tries to talk there. तो ना वो आरिफ अजाकिया साहब वो हैं MQM के थे, तो ये ना MQM को भी ऐसे बदनाम जैसे मुझे करना चाह रहे हैं ना, कि अभी I cannot sigh within myself, have a proper sigh of relief today, even like the controlling my breathing and all this. So if okay, I'll try to settle down in this video, like it helps me talk about these things. Otherwise, I'll be suffocating and dying here.
dystopia to reason उतर गया तो उधर मुझे बाद में they brought, okay, if someone isn't that sincere, it doesn't mean that I go there. I would be the one to avoid such people. I wouldn't be talking. मैंने बहुत लिया, friend का एक इतना लिया कि I mean comparatively principles, I said something to the principal about myself because I felt that something was on me. So I was trying to tell her that I wouldn't betray you or enjoy you for my. मैं तो खुदा को कहती थी कि Ya Allah, you made me feel like I'm sitting with a heavenly, it's like heaven. But does she feel the same way? If she doesn't feel the same way, then what's the use one way? I don't want this kind of a thing. It's unfair and unjust and this and that. तो मैंने जो मेल फ्रेंड्स का लिया कुछ थोड़ा कभी ले लिया कभी नहीं लिया लेकिन कभी दे दिया कुछ कि उनकी लाइफ बेटर हो जाए अपनी रेप्यूटेशन अपना उसका ख्याल नहीं रखा I was such a shy person. Sorry, I just moved my mobile. फिर भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं तो बड़ी बात मुझे नहीं करनी है वरना क्या फ़ायदा अभी वो कभी ऐसी oh God, don't push me to this. So have you seen Lamb is Rag? The sacrifices people make. मैंने भी ऐसे ही so बड़े बड़े लोग पता नहीं कितने लोग कर सकते हैं कितने लोग मुझे दूसरों का नहीं पता है लेकिन I know that I'm Allama Rashid Turabi's friend and वो बिका नहीं उनके वज़ीर वो कह रहे थे अपनी कहानी अल्लामा रशीद तुराबी की कहानी I don't want to quote him but he was a very honest man लेकिन हम लोग बेवकूफ़ हैं शिया हम लोगों ने अपना प्रोटेक्शन anti-Semitic जैसा like anti-Semitic Jews right now I think Jemima Goldsmith can bring a case against Maryam Nawaz in England on these anti-Semitic remarks. So, हम लोग, what? Shias, please. मौला है और ये है और वो है. Imam Mahdi है और आएगा. Now I've received a shock from the most honest ulama who used to say हम लोग यानी अल्लामा रशीद तुराबी मैं इस अहले बैत के थ्रेशोल्ड पे on the threshold of अहले बैत या दर पे मैं on the door I am फना हो रहा हूँ nowadays I can't cry for 10 days on the 10th day I will not be able to go I skip 1 day 2 days second day Muharram 4th day Allama Rashid Turabi 2 months majlis मसाइब क्या होता था उनका कितना मार देता यानी उस टाइम पे I don't know what's happened now we don't I don't know how many of you have that to take it maybe you do I didn't I had chronic fatigue I would cry and my tears would burn me during the separation of Mr. Sa I felt it was so unhealthy for me to cry. So anyways, this is just a personal thing. I hope this may be important, may not be important. But the important thing, maybe you'll understand these are some of the details I'm giving, for example. So I hope you would bear with me patiently. These are important things. So excuse me, I have this bad habit. So, ये कैसे लोग हैं सुन्नी मुस्लिम जो सुनते नहीं हैं और फिर दावा करते हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं
अरे मुझे तो ऐसा शौक लगा था। एक फ्रेंड आती थी बार बार, कभी ऐसे कह देती थी जब उसका कि अच्छा अल्लाह अल्लाह, अरे अल्लाह 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 करो। अब तो मैंने बहुत ले लिया ना, और देखा कि ये सुन्नी मुस्लिम्स, अच्छा इनके साथ सऊदी अरेबिया है, इनके साथ तुम लोगों के साथ यूएई है, तुम लोगों के साथ इधर भी क्या कर सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर ऐसे ट्रेचरसली काम करे। वो देखेंगे कि मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, वो वापस से भौंक रहा था मेरे ऊपर, तो जाहिल किस्म। सॉरी आई कैन नॉट कंप्लीट दिस। और हमने सब सब सही बोला है इस मुस्लिम अरब ने अगेंस्ट मुस्लिम अरब्स, कि हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वेस्टर्न बहुत प्रोग्रेस बहुत हमें दिया, हम लोग अपने समझ रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा कुछ कुछ है वो शैतानी है। रसूल देखें, आई वॉज जस्ट रीडिंग द कुरान आयत सूरह ज़ुमर, and then I was like, oh my God, I can't read this. Allah alone, तो Allah alone है। फिर you know what, okay, these people that who say that, अच्छा बेचारे कुरान ये भी कह रहा है। अच्छा अब थोड़ा शिया और सुन्नी के शौक से अनदर थिंग, अच्छा ये सुन्नी बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं कि अल्लाह अल्लाह इज़ ऑफ कोर्स, बट हाउ टू रीच अल्लाह, बिकॉज हम एक्नॉलेज करते हैं रसूलुल्लाह का पोजीशन, और फिर उनका लाइक आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट द मैसेज लाइक he cannot make mistakes. If he makes mistakes, how can you trust him? But Allah was pointing, then they'll say Allah was pointing out his mistake when he made a mistake. But we Shias do not say this. There's no commentary on this mistake. देखें multilingual Quran, Surah Azab की आयत, where Rasulullah made a mistake of practicing the pagan law of adopting a child and giving him his own name. तो फिर आप लोग इससे बराबर हमें समझाएं। आई मीन शिया शॉक ऑल्सो, हमारे ऑनेस्ट आलम्स, how could they overlook and all this. So what I was saying is that Allah alone, और पता है सूरह ज़ुमर में ये कह रहे हैं कि those who take others as gods and they say that they go to them, go to God using them. तो बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा फदक के स्पीच में, अबू बकर, we are the means of approach to God, और वो मीन्स ऑफ अप्रोच वो आयत बाकायदा कुरान की आयत है जिसको बीबी ने लेकर रेफ़र किया था और बोला था। तो यहाँ तो आप बीबी से जाएं, शियास दिस इज़ फॉर आई डोंट नो सुन्नीज। अच्छा फिर रसूलुल्लाह क्यों मर्सी पर्सोनिफाइड है, कैसे आया बर्थ मर्सीफुल प्रॉफिट? हाँ सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह सिर्फ अल्लाह, तो अल्लाह को क्या ज़रूरत थी? अल्लाह मर्सीफुल है ना, रहमान है। तो फिर ये बात आप लोग, तो कोई ऐसा हो कि ऑनेस्ट हो, झूठ और कंडीशनिंग प्रेजुडिस अपना वो नहीं लाए, रिलीजन में अपनी फीलिंग्स नहीं लाए, देखे बराबर। हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी हैं, ये झूठ, ये ब्लाइंड फॉलोइंग, और फिर शियाओं को दुख देना। अल्लाह ही अल्लाह फिर करा करो, दुख ना किसी को दिया करो। अच्छा हम किसी को बुरा नहीं बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने, तुम्हारे अल्लाह ने बुरा बोला है उन वाइफ्स को सूरह तहरीम में। तो ये लोग एक डिल्यूजन्स में हैं सुन्नी,
एक बहुत और बड़ा स्टबर्न डॉगमेटिक जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बिगेट्स हैं ये लोग। और कहते हैं कि अरे तुम लोग शियाओं को बुरा भला कहते हो, अपनी बिगेट्री नहीं देखते हो। Bigotry is a person who is obstinately or unreasonably attached to a belief, opinion or faction. See, इसका पूरा मैंने अभी डिक्शनरी गूगल सर्च में दिस एंड देन सऊदी अरेबिया इनको फंडिंग करती थी, हेल्प। तो आप लोग इधर आ सकते हैं, सुन्नी मुस्लिम पाकिस्तानी पंजाबीज, आपकी बैकिंग है इधर। जीसीसी में कतर है, कुवैत है, बहरीन है। शियाओं का एक ईरान, उसको नहीं आप छोड़ते। और शियाओं का क्या है पाकिस्तान में? ईरान भी हेल्प नहीं कर सकता है। ईरान के नॉट हेल्प। हिजबुल्लाह को टेररिस्ट बना दिया है, ठीक है, लेबनान। Why attack the Israelis? What have they done to us in Pakistan, Hezbollah? हमारे फेलो मुस्लिम्स ने हमें अटैक किया है। बिगेट्री, ये बिगेट्री है, ये हराम है, हराम जो तुम लोग कर रहे हो शियाओं के खिलाफ। इधर मैंने एक बहरीनी शिया से मदद ली, अचानक सुना है कि उधर शियाओं को बहरीन में मार रहे हैं, ऐसा मारा। हम लोग इधर चुप, कुछ बोल नहीं सकते थे। मेरे फादर ने कहा अगर इधर कुछ बोलोगी या फेसबुक से वो ग्रुप निकाल दो, वरना डिसअपियर हो जाओगी यूएई में। शियाओं के लिए कुछ नहीं बोलो। नहीं, मुझे तो बोलना पड़ेगा। ओवर माई डेड बॉडी आ जाएं, मुझे मारने के लिए रॉड लें, रेप करें, ये करवाएं, पाकिस्तानी से इंडियन से रेप करवाएं, मुझे तो हक की आवाज़ उठानी है। अभी बहुत हो चुका है, इनफ इज़ इनफ। ओके, आई विल कंटिन्यू लेटर, माई एनर्जी इज ड्रेन्ड।